Namaste. Vishakha versus State of Rajasthan is the classic case law that started the development of laws on sexual harassment in workplaces. Facts. Kahani piche ki. Bhavari Devi ji was a social worker in Rajasthan. While on duty of the Rajasthan state government, she was brutally gang raped for stopping a child marriage. बहुत ही दुखद घटना थी ये. As usual, जो कि ज़्यादातर हमारे यहाँ पे होता है, ट्रायल कोर्ट में जस्टिस नहीं मिला देवी जी को. रेपिस्ट्स वर अलाउड टू गो फ्री. तो एक NGO का ग्रुप था which collectively filed a petition. That group is called Vishakha. So there is no person known as Vishakha in this case. This is also a tricky MCQ that has appeared in some of the examinations. There was no woman named Vishakha in this case. That's a point to note. It was a writ petition to enforce fundamental rights, and it was held that sexual harassment violates Article 14, 15, 19, 1G and 21 of our Constitution. But then what to do, because कोई कानून तो था नहीं, explicitly कोई कानून नहीं था. तो सुप्रीम कोर्ट ने recognize किया कि ये जो दिक्कत है sexual harassment की at workplace definitely violates these articles in the Constitution, but there is no explicit law against this. Therefore, Ms. Meenakshi Arora, Naina Kapoor and Mr. Nariman assisted the court, and their names are recorded in the judgement. Since there was no explicit law to counter this problem, the judiciary could have instructed the parliament to make a law on this, but rather it referred to the Beijing Convention of 1995, in which the Chief Justices of Asia and this Pacific region were present, and they all agreed that the role of judiciary is quite detailed in the society. तो ये 3 पॉइंट रेफर किए गए थे जजमेंट के अंदर कि जुडिशरी का रोल है कि ऑल पर्सन्स आर एबल टू लिव सिक्योरली अंडर द रूल ऑफ लॉ, देन अबाउट ह्यूमन राइट्स, एंड देन द थर्ड इज to administer law impartially among persons and between persons and the state. The most important bit of this judgment from examination point of view is how international law is to be read into the domestic law. That is, अगर international law और domestic law के बीच में कोई inconsistency नहीं है, तो international law can be read into the absence of enacted domestic law. Focus on the highlighted portions of your screen. The international conventions and norms are to be read into them in the absence of enacted domestic law. यानी कि अगर कानून नहीं है तो आप international रेफर कर सकते हैं. अगर inconsistency नहीं है हमारे municipal law यानी local law और international law के बीच में. ये पॉइंट फिर reiterate किया गया जो कि यहाँ पे white में highlighted है. When there is no inconsistency between them and there is a void in the domestic law. Extremely important from the point of view of the examination कि अगर domestic law मिसिंग है हमारे देश में किसी भी टॉपिक पे तो इंटरनेशनल लॉ रेफर किया जा सकता है, provided that there is no inconsistency between that international law and, let us say, the tenets of our constitution. The apex court of our country framed guidelines that are known as the Vishakha guidelines. These guidelines, they were then adopted into a law which was very recently passed in 2013. We're going to get to that. First point, duty of the employer के बारे में बात की गई. It shall be the duty of the employer. Shall matlab compulsory. To prevent, I'm not going to read out the entire text on the screen, but rather only the highlighted bits. To prevent or deter the commission of acts of sexual harassment, and to provide the procedure for the resolution, settlement or prosecution of acts of sexual harassment by taking all steps required. ये actually ये वाली line मैंने read out इसलिए करी क्योंकि ये काफ़ी कुछ sum up कर देती है इन guidelines के बारे में कि एम्प्लॉयर के ऊपर सारा ओनस इन्होंने डाल दिया कि आप सेक्सुअल हैरेसमेंट को रोकिए, एक कंप्लेंट मैकेनिज्म बनाइए, एक कमेटी बनाइए जिससे women who face this they get a solution. Then sexual harassment was defined in this way, these 5 points. In the context of 1997, it was quite comprehensively defined here. Not going to read it out. You can read it from the screen. Moving on. पॉइंट नंबर 3, प्रिवेंटिव स्टेप्स. कहा गया कि आप नोटिफाई कीजिए, पब्लिश कीजिए और सर्कुलेट कीजिए अपने ऑफिस में कि सेक्सुअल हैरेसमेंट होती क्या है और प्रोहिबिट कैसे किया जाता है इसको. देन गवर्नमेंट और पब्लिक सेक्टर बॉडीज़ को कहा गया कि आप इनके जो रूल और रेगुलेशंस हैं अपने अंदर बाय लॉज में इंक्लूड कीजिए सेक्सुअल हैरेसमेंट के अगेंस्ट, ताकि कोई इंक्वायरी, कोई कमेटी बिठानी हो आपने तो एटलीस्ट यू हैव समथिंग टू रेफर टू. प्राइवेट एम्प्लॉयज़ को कहा गया कि इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर्स एक्ट के अंडर
सेक्सुअल हैरेसमेंट के प्रोहिबिशंस को इंक्लूड किया जाए। फोर्थ पॉइंट, क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स, कि अगर ऐसा कुछ होता है तो एम्प्लॉयर हैज़ टू मेक अ कंप्लेंट विद द अप्रोप्रिएट अथॉरिटी अंडर द अप्रोप्रिएट सेक्शन ऑफ द आईपीसी। मोस्ट क्रिटिकल पॉइंट, द विक्टिम ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट should have the option to seek transfer of the perpetrator or their own transfer। यानी कि जो महिला हैं जिनके साथ ये घटिया किस्म की वारदात हुई है, जिस आदमी ने ये किया है उसका ट्रांसफ़र या अपने आप को ऑफिस में से ट्रांसफ़र करा सकती हैं, ताकि उनके ऊपर कोई प्रेशर, कोई ब्लैकमेलिंग टैक्टिक और ना ही कोई इमोशनल प्रेशर हो। देन फिफ्थ पॉइंट, डिसिप्लिनरी एक्शन बट ऑब्वियस। देन कंप्लेंट मैकेनिज्म, कहा गया कि जो एम्प्लॉयर है वो अपने इंटरनल सिस्टम में एक टाइम बाउंड तरीका बनाए जिससे कि कंप्लेंट अगर कोई आई है तो उसको रेजोल्यूशन मिल सके टाइमली और फास्ट तरीके से। सेवन्थ पॉइंट, कंप्लेंट्स कमेटी। कंप्लेंट्स कमेटी के अंदर इन्होंने कहा कि स्पेशल काउंसलर रखिए, सपोर्ट सर्विस रखिए और कॉन्फिडेंशियलिटी रखिए। जो औरत इसके अंदर कंप्लेंट कर रही है सेक्सुअल हैरेसमेंट की, उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। Crucial point to note, the complaint committee should be headed by a woman and not less than half of its members should be women, क्योंकि अगर आदमी बिठा देंगे तो जस्टिस नहीं हो पाएगा इस पूरी सिचुएशन में। फर्दर, अनड्यू प्रेशर या इन्फ्लुएंस फ्रॉम सीनियर लेवल्स, ताकि जो महिला हैं उनका करियर ना ख़राब हो या उनके ऊपर से मैनेजमेंट लेवल से प्रेशर ना आए, तो इसके लिए जो कंप्लेंट कमेटी है वो NGO बाहर से जो कि सेक्सुअल हैरेसमेंट के एरिया में काम करती है, थर्ड पार्टी बन के इस कंप्लेंट्स कमेटी के साथ काम करे, ताकि जो पीड़ित महिला हैं उनको कोई दिक्कत ना हो। देन द कंप्लेंट्स कमेटी मस्ट मेक एन एनुअल रिपोर्ट टू द गवर्नमेंट। यू नो हाउ थियोरेटिकल इट इज़ एंड हाउ मच इन प्रैक्टिकलिटी इट वर्क्स आउट। 8 पॉइंट, वर्कर्स इनिशिएटिव, कि वर्कर्स की मीटिंग पे उनको ये परमिशन दी जाए कि वो सेक्सुअल हैरेसमेंट के टॉपिक को उठा सकें। अवेयरनेस, ऑब्वियस, कि आप इनको अपने कानून, हक, जो फीमेल एम्प्लॉयज़ हैं उनको आप अवेयर कराएं। 10th, अगर थर्ड पार्टी कोई ये ऑफेंस करती है ऑफिस में आके, फॉर एग्जांपल कोई विजिटिंग टीम आ रखी है दूसरी कंपनी से और वो सेक्सुअली हैरेस करती है आपकी किसी फीमेल एम्प्लॉय को, तो एम्प्लॉयर की ऑब्लिगेशन है कि वो उस एम्प्लॉय को असिस्ट करे। 11th पॉइंट, द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स वर रिक्वेस्टेड टू मेक अ लॉ रिगार्डिंग दिस व्हिच दे डिड। एंड लास्ट पॉइंट, that these guidelines will not prejudice any rights under the Protection of Human Rights Act 1993. That's obvious. Now, this is important from an examination point of view that in 2013, the Sexual Harassment of Women at Workplace Prevention, Prohibition and Redressal was enacted based on these very guidelines, and the definition of sexual harassment was kept the same. If you are a law student and want to write an answer based on this, do write the facts, then the issue, then the final judgment. Just sum up the guidelines. Thank you so much for watching. Take care.